Hmm. Hello everyone. Today we are going to discuss about tough practice test 1, which was conducted on 30th of July. So I'm going to discuss only about the 18 questions of the physics that have came in the examination. So let's start with the question. First question: a body is thrown at an angle to a horizon from a high cliff from a point O. Due to an air resistance, the difference between the time the body rises to the greatest height and the time it takes to return to the previous level at a point A is tau equal to 1. Body is thrown from this point A, performs projectile motion like this, and it again comes to the ground level. In the question, it is given that at a point A, the vertical component of velocity is 5 meter per second less than the vertical component of velocity at the starting point. तो इस पॉइंट पे जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लेट्स से दिस इज v/1, let's say this is v/2. It's given that v/2 is less than v/1 by 5 meters per second. It means that v/1 minus v/2 is nothing but equal to 5 meters per second, that is delta. Then it is given that the horizontal component of velocity at point A is Vx is equals to 3. Vax is equals to 3 meter per second. Also, in the question that this height, that is delta L, is given as delta L naught is equals to 3 meter, 2 meters. And also, along with that, they have mentioned that the force of a resistance to the moment of a body in the air is directly proportional to its speed. The force or the resistance to the force of this resistance to the moment of a body, both in x and y direction, is directly proportional to the velocity. Just this much is enough for us to solve the problem. So solve this, apply it in x direction as well as y direction. So first I'll implement it in horizontal direction. So if I implement it in the horizontal direction, so I can say that force in horizontal direction x is directly proportional to velocity in x direction. So I can say force in x direction is equal to some constant k into vx, negative sign because resistance oppose कर रहा है सब. So it क्या जाएगा, force is nothing but equal to ma. So I can write m into acceleration in x direction is nothing but equal to minus of k into vx. So m into acceleration x direction can be written as dvx by dt is nothing but equal to how much, minus of k into vx. So dt, so I get m into dvx is nothing but equal to negative of k into what is dv into d, what is vx into dt, that is nothing but equal to dx. So I get m into dvx is nothing but equal to minus k into dx. So integrating both the sides, what I will get, what is the integration of dvx, that is nothing but equal to negative of a. So I get m into 0 minus of velocity direction is nothing but equal to how much, minus of k. And what is the integration of dx, limits from 0 to delta L naught. So it will be delta L naught. So what I'll get? So I'll get m by k is nothing but equal to how much? Delta L naught divided by Vx. Keep it aside. Now apply it in vertical direction. So if I apply it in vertical direction, so applying it in vertical direction, what I'll get? So first I'll take it in the upward motion. So I'll take from a point of projection to the highest point. So if I consider the upward motion of these bodies, so what I'll get? So once again, force is nothing but equal to how much? So minus of k into velocity in y direction. Also weight, it's mg. So I will get m into dvy by dt is nothing but equal to how much? Minus k vy minus of mg. So I'll get m dy vy is nothing but equal to minus of k into what is once again dvy into dt. Vy into dt is nothing but dx minus of mg into dt. So integrate this side, what you will get integrating this. So I get minus of m, velocity will be negative. So it will be velocity in y direction.
is nothing but equal to minus of k. What is integration? X limits from 0 to capital H. So let minus of k into h. And so let's say t1 is the time taken to reach the highest point. That will be equal to mg into t1. So let's keep it as equation number 1. Then we'll solve it for the downward motion. So if I solve it for the downward motion, what I will get once again, m into dvy by dt is nothing but equal to minus kvy plus mg will get positive because the motion is the downward motion. So again integrate it in the same way. What I'll get, m into dvy is nothing but equal to minus of k. What is vy into dt is nothing but equal to dy plus mg into dt. So once again integrate all sides. What you will get? So integrating this, you will get m into integration of this, let's say v final in y direction. So m into v final in y direction is nothing but equal to minus of k. Again y limits from 0 to h. So h plus mg into, let's say t2 time it comes from highest point to the issue. So what will get, mg into t2. Let's say this is equation number 2. So add both the equations. So adding both the equations, what I get? So adding 1 and 2, what I'll get? So m common लिया तो m v final f minus v initial f. So what will get, m into v final minus v initial, that is nothing but equal to, but I question given that v initial minus v final, v initial in y minus v final into y is nothing but equal to how much? Something 3 is given, I think so, right? Just to 5. So 5 meter per second. So you will get delta v, but negative because final initial minus final is given. So is nothing but equal to how much? Minus of 2 kh plus what will get, mg into t2 minus t1, and difference in time that is given is nothing but t. So solve this equation, what will get the value of h? So h is nothing but equal to delta L naught the whole divided by Vx into delta V plus G into tau the whole divided by 2. So what is delta L naught given? Delta L naught is nothing but 2. V in x direction is 3. Delta V is nothing but 5. G is 10. Tau is 1. The whole divided by 2. So 2 to 2 cancel. 10 plus 5, 15 by. So 5 meter is the answer. It's clear. Next question number 2. A weightless rope is thrown over a slippery round log of radius r, the axis of which is horizontal, the ends of which the weight and a thin uniform rod are attached. In the position of a stable equilibrium, the rod makes an angle 30 degrees with the horizontal. The distance from the rod of a rod to which the rod is attached to the point of a contact between the rod and the log is r by root. The ratio of masses is eta, then find the value of 2 eta. Actually simple problem है, टू में तो इतना है नहीं ज्यादा कुछ, जैसे रॉड दिया हुआ है एंड दिस एंगल गिवन इज हाउ मच, अल्फा. ये और ये अटैच किया गया, ये ऐसा इसके ऊपर लॉक लगाया, से यहाँ पे ऐसे अटैच कर दिया. ये जो डिस्टेंस दिया है ये गिवन है, दिस नथिंग बट योर r अपॉन रूट 2. इसकी डायग्राम दी एंड दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ masses of weight and a rod, उसका रेशियो पूछा उन्होंने. तो इसकी एफबीडी बनाओ. तो आफ्टर फॉर्मिंग एफबीडी ये डायग्राम आप कैसे बनेगी, ये उसका यहाँ से देखो पूरा सा बड़ा बनाओ जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी. ऐसा रॉड, ओके लेट्स सी, ये एंगल उन्होंने दिया है अल्फा, इधर एंगल अल्फा, इधर से वेट इसे बनाया है like this. Look very carefully. If this is the radius r, if this is also the radius r, ये एंगल कितना हो जाएगा इधर वाला. So क्या ये एंगल, यहाँ से रॉड वेट का रॉड क्या हो जाएगा आपका mg, यस और नो. ये mg ये अल्फा, तो क्या ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा.
इसका मास mg, तो इधर से तरफ इधर भी टेंशन हो जाएगा आपका mg। अब ध्यान से सुनो, ये एंगल हो जाएगा आपका, दिस इज परपेंडिकुलर, टेंजेंट जा रहा है तो क्या 90 डिग्री हो जाएगा। लेट्स से ये एंगल ढूंढो सबसे पहले कितना है, ये क्या, ये आपका r/√2, और क्या ये r, तो एंगल आपका कितना हो जाएगा थीटा डैश। तो थीटा डैश की वैल्यू कितनी आएगी, tan ऑफ थीटा डैश इज नथिंग बट इक्वल अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी r अपॉन r/√2, यानी tan थीटा डैश की वैल्यू कितनी हो गई आपकी √2। सो tan थीटा डैश की वैल्यू हो गई √2, मतलब क्या ये √2, ये 1, क्या ये हो जाएगा आपका √3, ये थीटा डैश। सो साइन थीटा डैश will be equal to under root of 2 by under root of 3. Cos theta dash is nothing but equal to 1 upon √3, and tan theta dash is nothing but equal to how much, √2 by 1. ये just for the sake of simplicity निकाल के रखा, इनकेस आगे लगा तो यूज कर देंगे। So taking the net force along the length of a rod, and it must be how much, 0, because वो स्टेबल में है सब में। तो नेट फोर्स अलॉन्ग द लेंथ कितना हो जाएगा कि mg का कंपोनेंट इधर आ जाएगा, से हो जाएगा आपका mg cos ऑफ 90 माइनस अल्फा, इट मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच, ऊपर mg का कंपोनेंट, इसका स्मॉल m रॉड का मास, और उसका मास कितना है, उसका ब्लॉक का मास क्या, कैपिटल m, तो कैपिटल m का कंपोनेंट ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू, अब ये थीटा डैश आपने ले लिया है, ये सब ये कंप्लीट 180 डिग्री आपका। अब ये थीटा डैश, ये 90 माइनस थीटा डैश की फिर से आपका हो जाएगा थीटा डैश, तो कंप्लीट आपका कितना हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा डैश। तो mg का कंपोनेंट उधर कितना हो गया, दैट इज नथिंग बट कैपिटल mg into cos of 180 minus 2 theta dash. Yes or no? So it will be gg get cancelled, so small m, and what is cos of 90 minus theta, sin theta, sin alpha is equals to capital M. What is cos of 180 minus theta, cos theta, so cos of 2 theta dash। cos सेकंड क्वाड्रेंट में कितना होता है, नेगेटिव, so क्या नेगेटिव हो जाएगा आपका, yes or no? वैल्यू बताओ कितनी आएगी, देखिए दैट इज नथिंग बट इक्वल टू फोर्स करने के बाद, तो आई गेट sin अल्फा, अल्फा की 30, अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई 30, so m into sin of 30 nothing but equal to how much, m negative, negative में what is cos of 2 theta, that is nothing but cos square theta minus sin square theta, so I write m sin that is nothing but m by 2 is nothing but capital M into negative sign अंदर लिया तो cos square theta minus sin square theta minus cos square theta, so कितना आ जाएगा, that is nothing but small m by 2 is nothing but equal to capital M। sin theta की वैल्यू कितनी है, sin theta डैश की वैल्यू √2/√3 उसका स्क्वायर यानी कि 2/3 माइनस cos theta की वैल्यू कितनी 1/√3 उसका स्क्वायर यानी कि 1/3, सो यह जाएगा स्मॉल m by 2 इज नथिंग बट इक्वल टू कैपिटल M by 3। रेशियो पूछा है आपको कैपिटल M by स्मॉल m, सो कैपिटल M by स्मॉल m इज नथिंग बट इक्वल टू 3 by, got it? Next question, a balloon of radius capital R and mass n deforms upon a weak impact on the wall as shown in figure. In the case the deformation of a balloon is x very very less than r, assuming the excess pressure of air in a balloon as delta p, that is p is p minus p naught, where p is inside pressure and p naught is external pressure, and neglecting the elasticity at the time of impact of a wall is okay। टाइम ऑफ इम्पैक्ट ऑफ वॉल पूछा, ध्यान से सुनो, क्या ये आपका वॉल, ये आपका कॉन्टैक्ट, ओके, लेट्स से ये जो डिस्टेंस दिया आपको ये कितना मान लो डेल्टा एक्स, इसको मान लो एक्स, ये जो है दैट इज नथिंग बट द रेडियस आर, तो आपको क्या स्मॉल आर की वैल्यू मिलेगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर, small r will be equal to how much, so I can according to Pythagoras theorem, how can I write the values, so can I say this r square, this Pythagoras theorem, I can find the value of small r, so I can say capital R square is nothing but equal to how much, small r square plus
r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस ये x है, ये r है, तो क्या हो जाएगा r माइनस एक्स। हाइपोटेनस हो गया आपके कैपिटल आर, तो स्मॉल r की वैल्यू इधर से मिल गई। स्मॉल r की वैल्यू कितनी मिली, स्मॉल r स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू r स्क्वायर माइनस ऑफ r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स a into b. So r square will be equal to how much? So 2rx minus of x square. As x is very very less, we can neglect this term. So I can write r square is nothing but equal to 2r into x. इसको निकाल के ऐसे रख दो. Next, what is the area of the circle? So area of the circle, once again, area of the circle is nothing but that s is nothing but equal to how much? Pi r square. Compress होने के बाद yes or no? The smaller is the new radius. So pi into smaller की value कितनी है? That is 2r into x. So this is the area of the circle of radius r. So area of circle of radius moment. Then what they have given? The force acting. What we need to find? The force acting on the ball from the side of the ball. So what is force acting on the side of the ball? That is nothing but delta p into s. Yes or no? So that is nothing but equal to delta p into s की वैल्यू कितनी है? That is 2 pi r into x. This is the force acting. So what is the time period now? So equating f equal to kx के फॉर्म में अगर लिख ले, so writing equating it to f equal to kx के फॉर्म में, तो क्या ये आ जाएगा? k की वैल्यू कितनी मिली मेरे को? So k is nothing but equal to 2 pi r into delta p. So what is the time period? So time period is nothing but equal to how much? 2 pi under root of m upon k. So time period is nothing but equal to 2 pi under root of m upon k की वैल्यू कितनी है? 2 pi r delta. Things clear? Simple it is. Next question. The VT diagram shows the closed cycle 1, 2, 3, 1, which makes a certain mass of a nitrogen. It is known that a minimum pressure of a gas in this process is 3 into 10 to the power 5 Pascal. The mass of a gas is k into 10 to the power minus 2. Find the value of. Once again, a simple question. ये वाला time, either volume. Already mentioned like this. Okay, point number 1, point number 2, point number 3. ये जो वैल्यू दी 7.2 m क्यूब, ये दिया इन केल्विन, और ये दिया आपको 22.4. ये टेम्परेचर्स दिया आपको 273 और ये दिया आपको 409. क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द मास ऑफ द गैस. क्वेश्चन में देखिए मिनिमम प्रेशर इज एट 3 into 10 to the power 5. दिख रहा है मिनिमम प्रेशर इज विल बी एट 0.1. सो यूज पीवी इक्वल टू एनआरटी. सो यू कैन पीवी इज इक्वल टू एनआर इनटू टी. What is n? Mass upon molecular weight. So I can write at 0.1. So P1 V1 is nothing but m upon capital M into R into T1. इधर से mass मिल जाएगा. That is nothing but equal to P1 V1 capital M divided by R into small m. Values डाल दो, you will get the answers. P minimum की value कितनी दी? 3 into 10 to the power 5. Volume कितना है इसका? 11.2. Mass m कितना है वहाँ पे? Substitute डाल दो values उधर. We'll get the answer. I think I's answer should be 4 into 10 to the power minus 2 kg. आके substitutions कर दोगे, R की वैल्यू डाल देना 8314 of nitrogen, उस हिसाब से वैल्यूज डाल देना. You find the value of small m. Okay. P1. Next. A disc-shaped body having a hole of mass 10 kg and radius r 10 by 9 meters is performing pure rolling on a rough horizontal surface. In a figure, O is geometrically the center of the disc, and this instant the center of mass C of a disc is at same horizontal level with the O.
The radius of gyration of the disk about the axis passing through the C and perpendicular to the plane of a disk is r by 2. And at the instant shown in the angular velocity of a disk is omega equal to root of g by r radian per second in clockwise sense. Acceleration दिया आपको 10 मीटर पर सेकंड पर. The angular acceleration alpha is very simple once again. ये भी इजी क्वेश्चन. अब इसमें सिंपल एज इट इज दिया है. ये डिस्क उसमें ये होल कर दिया, लेकिन होल करने के बाद फिर उसका यहाँ पे शिफ्ट हो गया ओ से लेकर डी और सी, और इसका रेडियस ऑफ गायरेशन दिया आपको आर बाई ऑलरेडी मेंशन. तो निकालने की तो जरूरत नहीं. क्वेश्चन में ओमेगा की वैल्यू दी अंडर रूट ऑफ जी बाय आर. बस you need to find out the angular acceleration. As you know, tau is nothing but equal to I alpha. Angular acceleration alpha is nothing but tau divided by I. Rolling is at point P. So just find the torque at point P and find moment of inertia at point P. खत्म, you will get the answer. अब जैसे ओमेगा से घूम रहा है कि एक फोर्स लगेगा, that is mr ओमेगा स्क्वायर. क्या अंदर की फ्रेम ऑफ नॉन यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिया तो क्या पीछे की तरफ क्या आपको सूडो फोर्स लगेगा, that is F. Yes or no? तो दो फोर्सेस लगेंगे, एक तो mg की वजह से लगेगा टॉर्क और दूसरा लगेगा ये दो टॉर्क वजह से लगेगा, एक mg की वजह से और एक सूडो फोर्स की वजह से. बताओ mg की वजह से टॉर्क कितना लगेगा पी पॉइंट पे, दैट इज नथिंग बट mg into r by mg तो एज इट इज नीचे लग रहा है. इसकी वजह से कितना लगेगा सूडो फोर्स की वजह से टॉर्क, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू m into a into r by 2. सो कितना लगा टॉर्क, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू mg into r by 2 plus what is m, acceleration is nothing but mr omega square. So m r omega square into r by 2. और क्वेश्चन में दिया है ओमेगा इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ जी बाय आर, तो ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट जी बाय आर. सो एम जी आर बाय 2 प्लस जी बाय आर डाल दिया तो क्या आ जाएगा आपका एम जी आर बाय 2. तो क्या आ जाएगा आपका एम जी आर. दिस इज द टॉर्क एट पॉइंट पी. फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट पी. For finding the moment of inertia at point P. What is moment of inertia at point P? I can write that is the moment of inertia about center of mass plus क्या md square. अब ये P पॉइंट पे ये डिस्टेंस आपको पता है, ये डिस्टेंस है r by 2, ये r है, तो d की वैल्यू कितनी होगी, d will be nothing but equal to, so d square is nothing but equal to how much, r square plus r by 2 का होल स्क्वायर. क्या d मिल गया मेरे को. So at center of mass का moment of radius of gyration, that is nothing but m k square. Radius of gyration दिया r by 2. So क्या m into r by 2 का whole square plus m into d square की वैल्यू कितनी r square plus r by 2 का स्क्वायर यानी r square by 4. So ये कितना हुआ, that is nothing but equal to r square by 4 plus mr square by mr square by 2. So mr square by 2 plus mr square, that is nothing but p by 2 mr square. So this is moment of inertia at point P. As you know, torque equal to I alpha. So just substitute the values. So alpha is nothing but torque upon I. Torque की वैल्यू कितनी निकाली mgr और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना 3 by 2 mr square. So एक r कटा, एक m कटा. So 2g upon 3r with the value of alpha. It's clear? Value substitute करो, you will get the answer. g की वैल्यू 10 लेने के लिए बोली. So 2 into 10 divided by 3. रेडियस दी आपको 10 by 9. 10 से 10 कट, 3 3 जा 9, 3 ऊपर गया, 3 2 जा 6. So 6 मीटर पर 6 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इज द एंगुलर एक्सेलरेशन. It's clear? Next question. A thin rigid dielectric ring of mass m and radius r can freely rotate about a fixed point O perpendicular to the plane of a ring. The ring is uniformly charged along its length. Its charge is q. A small piece of a ring in area of point A is cut so that a gap of length L is very less than R. The ring was at a rest, after which the uniform electric field was turned on perpendicular to the axis of the ring and the straight line O. The maximum angular velocity of the ring is. They are asking you to find the angular velocity. सिंपल सी बात, रिंग में से कुछ काट लिया तो यार क्या नेगेटिव क्यों मान लो. फर्स्ट ऑफ ऑल तो लैम्डा, तो इस वाले पॉइंट इसकी लेंथ मान लो l. इसकी लेंथ कितनी दी उन्होंने l. इस पॉइंट पे चार्ज कितना आएगा, पहले तो लैम्डा. व्हाट इज
charge dq on this length is nothing but equal to lambda into this length L. Lambda into this length L. Lambda की value की lambda is nothing but charge per unit length. So charge is q, length is 2 pi r. And negative charge generate होगा at this point. So dq की value कितनी मिली मेरे को small q is nothing but equal to minus of q into L divided by 2 pi r. कितना charge generate हुआ इस छोटे से gap में. So when this charge is placed in electric field, क्या potential की वजह से वो क्या accelerate होगा. What is the energy stored in that charge q? Q में energy stored कितनी होगी? That is nothing but q into potential delta v. So that is nothing but q into electric field की वजह से that is nothing but E into R. Now to be negative to positive हो जाएगा. So this energy is helped to accelerate the particle with the velocity v. So kinetic energy कितनी होगी उसमें that is nothing but equal to 1/2 mv square. So I can say this kinetic energy is responsible this energy stored due to this potential or the electric field is utilized in the form of kinetic energy. So can I say kinetic energy is nothing but equal to this energy stored in this charge. So this 1/2 mv square must be equal to how much? That is nothing but QL divided by 2 pi r into ER. एक r से r कटा. So ये 2 से 2 भी कटेगा. तो क्या बचेगा? V square will be equal to how much? QLE divided by pi. So V will be equal to how much? Under root of QLE upon pi. But this is the velocity. Angular velocity पूछी तो what is angular velocity? Omega is nothing but V upon R. So that is nothing but equal to under root of R bracket के अंदर तो R square बन जाएगा. So QLE upon pi and R square. So this is the angular velocity. Things clear? Next problem. A point-like weight M is attached to the ring of a radius capital R and a negligible mass. A ring moves out of its unstable equilibrium position as shown in figure, and it starts slipping on the ground when the displacement of a center is just R. The coefficient of friction between the ring and the horizontal ground is approximately. You need to find out the value of the coefficient of friction. Suppose let's say नीचे की तरफ आ रहा है, let's say बन रहा है, तो कितना हो जाएगा आपका कि ये आपका मास वो जस्ट मान लो थोड़ी देर के लिए नीचे की तरफ आ गया. तो इस पॉइंट पे आने के बाद क्या वेलोसिटी उसकी इस डायरेक्शन में होगी. एंगल्स बताओ. सपोज लेट्स से वो अल्फा एच है, तो ये अल्फा है, तो एंगल कितना हो जाएगा इधर का? ये हो जाएगा अल्फा बाई 2. ओके, इधर वाला ये भी एंगल हो जाएगा आपका अल्फा बाई 2. ये सब. तो ये क्या उसके ऊपर क्या ये नॉर्मल लगेगा? क्या फ्रिक्शनल फोर्स ये लगेगा आपका इधर की तरफ. इधर आने के बाद दिस विल बी वैल्यू ऑफ एफ, दिस विल बी वैल्यू ऑफ एस, एंड ये होगा आपका नॉर्मल एन. उधर से म्यू नॉट कितना होगा फ्रिक्शन? दैट इज नथिंग बट एस अपॉन एन. इट विल बी नथिंग बट इक्वल टू tan ऑफ अल्फा बाय 2. व्हाट इज tan ऑफ अल्फा की वैल्यू 1, so that is nothing but tan of 0.5. so what is tan of 0.5 radian? So nearly equal to उसके बराबर होगा 0.5. so mu naught will be equal to nearly equal to 0.5. Next, a pendulum with a massless string of length L and a bob of mass M is attached inside a railway carriage, which is moving with a speed v naught as shown in figure. The carriage is brought to a rest uniformly by applying brakes. When the carriage comes to the rest, the pendulum string is horizontal. The minimum magnitude of retardation of a carriage such that the bob completes vertical circular motion. तो कितना लगेगा? Just apply law of conservation of energy. Applying the law of conservation of energy, क्या मिलेगा आपको? क्या ये बॉब ये needs to complete just one circular revolution. इसकी उधर की तरफ velocity आपकी v naught, तो क्या उसको सर्कुलर करने में क्या इधर तक जाना चाहिए? ऐसा ही yes or no? Applying this, तो उसके पास कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए वो पूरा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे. सो क्या ये आपका इक्वेशन आ जाएगा आपका ma into r minus of 2 mgr must be equal to how much? mv square by 2. yes or no? And topmost point पे क्या mv square by r is greater than mg?
Yes or no? Use these hints and solve the answer. Okay, nearly 25 आना चाहिए. What should be the value of retardation? A की value कितनी होनी चाहिए nearly? A must be equal to 25. Just put the substitute the values, you will get the answer. Okay. Next. Question number 9. A thin cylindrical shell as shown in figure is subject to the internal fluid pressure P. The stress developed along the circumference, and they are asking you to state that, and also they are asking the stress developed along the length. Okay, cylindrical. इसका diameter है D and इसकी length given है L. And they are asking you to find the stress along the circumference, and they are asking you to find the stress along the length. Along the circumference क्या आ जाएगा? You know the forces must be same, yes or no? The force due along the circumference, के along तो circumference के along कितना आएगा? Stress into area. So stress into area. What is area? That is nothing but pi into d into t. Is nothing but equal to pressure into area. Pressure into area कितना आएगा उसका? pi by 4 d square. So कितना आ जाएगा आपका? pi से pi कट. So stress कितना आ जाएगा? That is nothing but equal to pd upon 4t is the stress along the circumference. वही अगर मैं calculate करूँ along the length, तो length के along कितना आएगा? Once again stress into उसका एरिया कितना आएगा? 2 times LT is nothing but equal to pressure into उसका एरिया कितना है? That is L into D. So L से L कटा तो ये कितना आएगा आपका? Stress is nothing but PD divided by 2 into this is the stress along the length and this is the stress along the circumference. Next, thread is threaded through a thin hole running along the vertical axis of a cylindrical icicle. At the end of which the ball of a material with a very high thermal conductivity is fixed. At the beginning of the experiment, the ball is heated to a certain temperature T1, and the temperature of the icicle is equal to the temperature of the surrounding, that is 0 degrees centigrade. Due to this melting of the ice, the icicle goes down and melted water flows to form a drops at a temperature of T0. In this case, the cylindrical channel with the area is 2 centimeters square remains behind the thread. And they are asking you to find the initial temperature, and they are asking you to find the speed V0 at which the initial when the time when the level is dropped to the 2/3 of the height h. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वाला. आपको वैल्यूज भी दिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यूज C is nothing but 59.4 joule per degree centigrade and the specific heat of melting of ice is 330 kilojoule per degree centigrade. And density of ice is also 900 kg per meter cube. Now look over here. इस वाले केस में क्या हीट लॉस्ट बाय द बॉल कितना हो जाएगा बताओ? क्या mcp डेल्टा t must be equal to how much? तो कैन आई राइट कितना हीट लॉस किया उसने वो बताओ? वैल्यूज पर केजी गिवन है सर नो. mc डेल्टा t m की वैल्यू दी का कितना मास उधर मेंशन किया है लो. तो टेक पर यूनिट मास what is heat lost by the ball per unit mass? That is nothing but C into T1 minus T is nothing but equal to how much gained by that another one. उसने कितना gain किया उधर? That is nothing but equal to rho into S into H into इधर से T1 की वैल्यू निकाल लो. वैल्यू डालने के बाद सब वैल्यूज मेंशन है. C की वैल्यू गिवन, T1 की वैल्यू गिवन, T1 की वैल्यू निकालनी होगी, T की वैल्यू गिवन है that is 200 degree centigrade. So C की वैल्यू 59.4, T1 निकालना है, T की वैल्यू मेंशन है that is nothing but equal to 200 degree centigrade.
डिफरेंस ले लो डिग्री सेंटीग्रेड में, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। रो की वैल्यू इज 900, एस की वैल्यू कितनी मेंशन दी उन्होंने, समथिंग नॉट इक्वल टू एच का वैल्यू इज 0.1, लैम्डा के वैल्यू कितनी मेंशन मिला था 330। और कुछ बस to solve karo what after solving this we will get the value of t1, so t1 will be equal to how much 100 degree centigrade, values डाल दो you will get the answer, t1 की वैल्यू इधर से मिल जाएगी आपको। next they are asking you heat transfer rate और रेट के बारे में the heat transfer power is proportional to the temperature difference of the ice. Heat transfer power is directly proportional to the temperature difference. अब जब लिखोगे आप heat transfer power is directly proportional to the temperature, यानी how can I write that is lambda PS dH by dt must be directly proportional to our temperature difference. So constant alpha get T minus T to T इधर से क्या मिलेगा, can I say nothing but equal to alpha T by minus of lambda P minus of T naught, इधर से मिल गया मेरे को कि velocity is nothing but equal to how much dH by dt, and it varies linearly with height. So if it is varying linearly with ये ऐसे कहाँ मिल गया मेरे को, अब फिक्शन है ये यहाँ पे भी यहाँ पे मान लो आपको ये आइडिया पे क्वेश्चन में ही मेंशन है, ऑप्शन 3 और 4 देखो, ऑप्शन 3 और 4 में दिया है कि स्पीड कितनी हो जाएगी व्हेन 2/3 हाइट इज 2/3 हाइट, ये आपको दी है 2/3h और क्या ये h, तो कैन आई से फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल, तो कैन आई से v0 minus 0 divided by h minus 0 is nothing but equal to how much v0 minus v2 the whole divided by 2h by 3 minus 0, तो ये आएगा v0 minus v0 upon h is nothing but equal to v0 minus v2 divided by 2h by 3, okay, h is कटा तो v0 will be equal to how much 2 v0 will be equal to how much 3 v0 minus of 3 v2, so 3 v2 will be equal to how much v0 की वैल्यू उन्होंने कितनी दी 0.1, so v0 दी आपको 0.1 यानी सॉरी v1 की वैल्यू उन्होंने दी 0.1 यानी v2 की वैल्यू उन्होंने दी 0.1, v2 given is nothing but 0.1, so v0 की वैल्यू कितनी मिलेगी 0.1, so option number B and C will be the correct answers. Next question, two bits of negligible mass are on the sides of the rod bent at a right angle connected by a thread of length L. At the initial moment of time, the system is at rest. Then one of the bits begin to move in the upward direction from the corner so that the tension force on the thread is constant and equal to F0. If the initial moment of time the second bead was at a distance a from the top, the frictional force of a bead on the rod is considered constant and equal to F0. तो आपको एनर्जी पूछी है, डिस्टेंस और पोजीशन पूछा और द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी पूछी गई, तो फोर्स कितना मिलेगा आपको बताओ, व्हाट इज द वर्क डन, तो मान लो बिड कोई भी इनिशियल मान लो, डायग्राम आपको ऐसे दी गई है, ये एल, ये डिस्टेंस कितना दिया आपका ए, 2 पॉइंट्स, और ये बिड के ऊपर की तरफ मूव कर रही है आपकी, तो मान लो अगर कोई भी एक्स डिस्टेंस बिड ऊपर की तरफ चलेगी तो डायग्राम कैसे मिलेगी आपको, ये इनिशियल पॉइंट मान लो एक्स डिस्टेंस
आगे की तरफ आ गया, ये डिस्टेंस मूव किया, तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा आपका a माइनस एक्स, क्या आपको फोर्स, क्या पीछे की तरफ आपका फ्रिक्शनल फोर्स, what is total work done, so work done कितना मिलेगा is nothing but equal to negative, that is nothing but small f naught into x frictional force, work done, that is force into displacement, frictional force f naught into displacement, force is opposite to the displacement इसलिए क्या negative, plus इसकी वजह से force कितना आएगा, that is nothing but f naught by l into ax minus x square by, तो force कितना है, that is nothing but equal to minus of f naught x plus ये कितना हुआ आपका, that is nothing but पूरा सॉल्व किया, f naught अंदर की तरफ लेके आओ, क्या ये बन गया आपका so minus of f naught into x square plus 2 into f naught a minus of f naught l into x the whole divided by 2a. So okay, this will be the value of your kinetic energy. So this is एक तो energy मिल गया, work done is nothing but your kinetic energy. Next आपको पूछा है when will the kinetic energy be maximum, maximum minimum आपको concept आपको पता है, so kinetic energy will be maximum, so आपकी kinetic energy will be maximum, kinetic energy will be kinetic energy maximum when differentiation of your work done will be equal to, or differentiation of kinetic energy will be equal to 0. Differentiation of work done with respect to x must be equal to 0. इसका differentiation कितना आएगा, so minus of f of x square, the differentiation that is minus of 2 f naught into x, और plus इसका differentiation 2 f naught a plus f naught l must be equal to 0. ये कितना हो जाएगा, therefore 2 f naught a plus f naught l must be equal to how much, a capital F है, okay, it must be equal to 2 small f naught into x, या 2 से 2 कटा, so x की वैल्यू कितनी आई आपकी, so x naught will be equal to how much, so capital F naught, ये आएगा a plus l divided by small f, so this is the value of x. अब ये x की वैल्यू उठाओ और सब्स्टिट्यूट इन वैल्यू ऑफ वर्क डन मैक्स कितना मिलेगा आपको, so work done maximum is nothing but equal to ये वैल्यूज उसमें डाल दो ऊपर वाली इक्वेशन में, so we get the maximum value of energy is nothing but f naught a minus of f naught l the whole divided by 2 f naught l, okay, उसमें डाल दो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, आनी चाहिए, okay. Next problem, question number 13. On a horizontal platform, there is a vessel with water. Thin rod AB is fixed in the vessel, inclined to a horizon at an angle alpha. A uniform ball of a radius r can slide without friction along the rod, passing through its center. The density of a ball material is rho naught. The density of water is rho naught less than. When a system rotates with a constant angular velocity around the vertical axis passing to the lower end, the center of a ball is set at a distance L from it. तो आपको फोर्स पूछा है, एंगुलर वेलोसिटी पूछी, एज यू नो ये आपका कंटेनर, इसके अलावा वो क्या ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा ये क्या, ये आपका लगेगा नीचे की तरफ एम जी, क्या लगेगा आपका नॉर्मल एम, क्या ऊपर की तरफ लगेगा आपका बायंसी, और इधर की तरफ एक लगेगा आपका सिग्मा, तो आपका बायंसी 1 विल बी नथिंग बट इक्वल टू क्या, रो वी जी, बायंसी 2 विल बी इक्वल टू हाउ मच, रो वी ओमेगा स्क्वायर इनटू एल cos थीटा. So summation of forces in x direction equal to ma किया आपने, तो क्या ये अल्फा, तो क्या ये अल्फा, ये सॉरी क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस अल्फा, तो आई कैन राइट दिस बायंसी 2 माइनस ऑफ n sin अल्फा must be equal to how much, rho naught v omega square into l cos, तो बायंसी 1 कितने मिले मेरे को, बायंसी 1 मिलेगी इज नथिंग बट इक्वल टू rho naught vg plus n cos
n sin just equated you will get the values. n की वैल्यू कितनी मिलेगी मेरे को? So n will be equal to how much? So n will be equal to p minus p naught vg divided by omega will be equal to how much? Under root of g tan alpha divided by L sin alpha. तो L की वैल्यू कितनी? L is nothing but equal to R divided by sin alpha. ज्योमेट्री से वैल्यू डाल दो तो ओमेगा की वैल्यू कितनी मिलेगी? So omega will be equal to how much? That is nothing but equal to L की जगह sin alpha डाल दो, sin alpha कट, तो क्या बचेगा? That is equal to under root of g by L into tan alpha, g by R into tan alpha. वैल्यूज में यहाँ पे थोड़ा ही होगा, ये साइन अल्फा हो जाए एन, यहाँ पे आपका कॉस अल्फा आ जाएगा, एन कॉस अल्फा, यहाँ पे भी आपको होगा कॉस अल्फा, यहाँ पे भी आएगा आपका कॉस अल्फा। वैल्यूज क्या हो गया आपकी? एल अपॉन कॉस अल्फा। तो एल आर अपॉन कॉस अल्फा, सो ये tan अल्फा ग्रुप के बाहर आ जाएगी, तो हो जाएगा आपका ओमेगा अंडर रूट ऑफ जी बाय आर इनटू tan ऑफ अल्फा। Next, the resistance each of 16 ohm and capacitance of each 100 microfarad are arranged as shown in figure. A battery of EMF 12 volt is joined across A and B. Then, reading of an ammeter when key just closed and reading of an ammeter after a long time. So ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में कैसे दिया है? when क्वेश्चन में मेंशन है कि द रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम एंड 100 माइक्रोफैराड अरेंज एज शोन इन फिगर, तो ऐसे अरेंजमेंट दिए, तो आपको पूछा है कि जस्ट की क्लोज करने के बाद कितना रीडिंग देगा एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम रहने के बाद कितना रीडिंग देगा। ध्यान से सुनिए, सर्किट कैसे मेंशन है आपका? दिस इज योर सर्किट। फिर उसके बाद इसे से कनेक्ट करके इसको एमीटर और फिर बैटरी से कनेक्ट किया गया। अब ये सब रेजिस्टेंस आपको 16 दी है और ये बैटरी कितना दिया आपको? 12 वोल्ट बैटरी, और ये सभी 16 ओम दी है। क्या ये 16 ये 16 ये 16 16 पैरेलल में क्या इनका 8 हो जाएगा? ये 16 ये 16 ये 16 16 का पैरेलल का 8 हो जाएगा। ये 16 ये 16 इनका पैरेलल के फिर से 8 हो जाएगा। ये 16 ये 16 इनका पैरेलल फिर से कितना हो जाएगा आपका? 8। सभी अगर मैंने फिर से अगर डायग्राम बना दी तो अब इस बार आपका डायग्राम कैसे बनेगा कि ये ये क्या ये होगा 8, ये होगा 8, ये होगा 8, ये होगा 8, क्योंकि 16 ये हो गया आपका 16। ओके, वन सेकेंड, ये बैटरी आपके, इसको अगर मैंने फोल्ड कर दिया तो क्या 8 और 8 पैरेलल, 8 और 8 का पैरेलल फोल्ड,
ये और 8 इनका पैरेलल, इन दोनों का पैरेलल कितना हो गया 4। और ये आपका कितना है, ये 16 है और ये 16 है। तो इनका डायग्राम कैसे बनेगी फाइनली, क्या ये आपका हो गया 4, क्या ये आपका हो गया 4, K16 और क्या ये 8। तो ये हो गया आपको 4, ये हो गया 4, ये हो गया 16, ये हो गया 16, ये हो गया 8। और इसके अक्रॉस कनेक्टेड, ये सॉरी, इसका इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा आपका, इनका इक्विवेलेंट कितना बन गया अभी आपका, तो दैट इज नथिंग बट इक्वल टू, ये सीरीज में आ गए 8 पर, ऐसे डायग्राम आ गया भाई आपकी। कनेक्टेड किसके बीच है, केस के बीच में, ना ना स्टोन नहीं बनेगा ये, इसकी रिड्यूस्ड डायग्राम कैसे बनेगी आपकी, ये स्टोन तो नहीं बनेगा ये। क्योंकि इसके बीच में कनेक्टेड है तो ये बीट स्टोन तो नहीं बनेगा। तो ये इसका आगे वाला डायग्राम कैसे बनेगा अब आपका, क्या अब ये 8, इसके साथ ये 8, इसके साथ ये 16, साथ के ये 16, साथ के ये 16, साथ के ये 16, इसके साथ के ये 8, इसके साथ के ये 8, ये हो गए 16, ये हो गए 16, ये 8, ये 8, ये 8 और ये 8, और इसके बीच में अक्रॉस के लिए कनेक्टेड किया गया यस और नो। ये बैटरी आपकी कितनी 12 वोल्ट, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी दी है ना आपको। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, इनका इक्वल कितना आ गया, फिर फाइनली ये डायग्राम किससे बनेगी, उसको सॉल्व करो। तो क्या ये हो जाएगा आपका 68/7 और ये हो गया आपका 16। डायग्राम किससे बनेगी आपकी, अब ये डायग्राम हो गया आपका लाइक दिस, ये हो गया 68/7, ये डायग्राम नीचे ये रेजिस्टेंस कितना हुआ आपका 16 हो, और क्या ये इधर पोटेंशियल 12 वोल्ट, ये ए और ये इधर एमीटर लगा हुआ। अब ये दोनों के पैरेलल में हो गए तो इनका पैरेलल कितना हुआ 68/7 into 16 divided by 68/7 plus 16, तो नियरली इनका रेजिस्टेंस कितना आया 6 ओम। What is current in the reading when switch is closed? Current in the reading I will be equal to how much? V by R. V by R. तो कितना होता है, 12/6 nearly equal to 2 ampere approx will be the answer. If the switch is closed for infinite long time, if the switch is closed for the infinite long time, तो infinite long time के लिए अगर switch close किया गया तो क्या आएगा फिर आपका, अब क्या आपका infinite long time के लिए अगर switch close किया तो क्या आपके डायग्राम अब ऐसे बनेगी, ये इधर के ये 16, ये 16, ये 16, ये 16, क्या हो गया 16, 16, 16, 16, क्या इधर से कीबोर्ड, इसको सर्किट और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा सर्किट कैसे बनेगा, ये 16, ये 16, क्या ये 32, तो क्या ये बन जाएगा आपका 32, और ये पॉइंट ए, ये पॉइंट
ऐसे वोल्टेज हुई। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 60 32 32 32 का पैरेलल 32 32 का पैरेलल 16 16 16 का सीरीज वंस अगेन 32 तो 21 आ जाएगा आपका इधर 32 नीचे की तरफ आ जाएगा आपका 60 क्या ये बैटरी तो 16 और 32 का पैरेलल कितना होगा आर इक्विवेलेंट इज नथिंग बट इक्वल टू 16 into 32 divided by 16 plus 32 ये कितना आएगा नियरली 32 by 3 is clear next problem करंट कुछ है ना वो करंट तो निकाल लोगे ना V by R पोटेंशियल कितना है 12 रेजिस्टेंस कितना है 32 by 3 ओके 4 से डिवाइड करो 4 8 32 4 3 12 and 3 3 9 so 9 by 10 carry to the power okay next flat capacitor plates are connected to a constant voltage source at the same time they are attracted with the force F naught with what force will these plates be attracted to 50 dielectric and 1 metal plate are introduced in the capacitor. Thickness of a plate is slightly less than 1 by 3 of the in the plates. Relative permittivity is epsilon. अब आपको बोला है इनिशियली कैपेसिटेंस आपका सी इसको मैंने किसी बैटरी बी के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया नेक्स्ट केस में दिया है कि आपका अगर डाइलेक्ट्रिक उसमें डाल दिया तो क्या वो सीरीज में रहेंगे सीरीज में रहने के बाद क्या आपका डायग्राम आप ऐसा बन गया क्या ये हो गया आपका डी बाई 3 ये होगा आपका डी बाई 2 और क्या ये कनेक्ट रहेंगे अक्रॉस पोटेंशियल बी डाइलेक्ट्रिक दिया आपको आपको पता है कैपेसिटेंस इज नथिंग बट एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी डी की वैल्यू अगर डी बाई 3 की हुई अगर डी की वैल्यू अगर डी बाई 3 हुई सी डैश दैट इज एप्सिलॉन ए अब डी की वैल्यू अगर डी बाई 3 हुई तो कैपेसिटेंस सी डैश क्या आपका 3 टाइम्स सी होगा तो ये क्या होगा आपका 3 टाइम्स सी ये होगा आपका 3 टाइम्स तो इनका सी इक्विवेलेंट कितना होगा अब ये दोनों सीरीज में कैपेसिटेंस कैसे ऐड होती है आपके सीरीज में क्या 1/c plus 1 तो c इक्विवेलेंट कितना होगा आपका 1/c इक्विवेलेंट इज नथिंग बट 1/3c plus 1/3c क्या हो गया आपका 2/3c यानी c इक्विवेलेंट कितना हुआ आपका 3c अपॉन ये हुआ आपका c इक्विवेलेंट तो बताओ व्हाट इज फोर्स इनिशियल वाले केस में फोर्स आपको पता है दैट इज नथिंग बट q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन आया दैट इज नथिंग बट इक्वल टू q इक्वल टू cv तो क्या हो जाएगा c स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाउ मच 2a एप्सिलॉन सो दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट अब मान लो अगर मैं पैरेलल रख दूंगा तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा तो क्या फोर्स लगेगा फॉर्मूला फिर से सेम तो इस बार लगेगा दैट इज नथिंग बट इक्वल टू वंस अगेन c इक्विवेलेंट इस बार c इक्विवेलेंट कितना है 3c बाय इनटू v का स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट तो कितना हुआ दैट इज नथिंग बट इक्वल टू वंस अगेन अगर मैं c स्क्वायर v स्क्वायर कॉमन ले लूं k टाइम्स भी ऐड हो जाएगा दैट इज k डाइलेक्ट्रिक भी है ना उसमें k दैट इज नथिंग बट c स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में कितना आएगा आपका 3/2 into k का स्क्वायर तो f will be equal to how much 3k/2 a whole square into f naught. So this will be the value of question number 70. A wedge having the length, breadth, and height equal to a moves in a medium having a pressure P naught and it enters into a medium 2 having the pressure 2 P naught. Assuming all the surfaces to be the smooth, change in kinetic energy of a wedge when it completely enters in the medium. मान लो
जैसे अंदर अंदर जाएगा तो क्या उसका एरिया बढ़ता जाएगा, एरिया बढ़ता जाएगा तो क्या वो प्रेशर आपका जो है वो वेरिएबल आ जाएगा ना, एनर्जी में भी ऑर्डर में सब वेरिएबल आ जाएगा। तो डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो उसको इंटीग्रेशन से करना है। सपोज मान लो वो किसी भी एक्स डिस्टेंस, कोई भी एक्स डिस्टेंस अंदर की तरफ चला गया मीडियम वन में से मीडियम, तो अब ये सब ए गिवन है, तो अगर ये मान लो एक्स डिस्टेंस अंदर चला गया तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा आपका, एक्स होगा। इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है आपका पी नॉट, क्योंकि अंदर की तरफ प्रेशर है पी नॉट, इधर की तरफ प्रेशर है आपका 2 पी नॉट। तो व्हाट इज नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, वो कितना हो जाएगा, दैट इज पी नॉट इंटू ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2 पी नॉट इंटू इसके ऊपर प्रेशर कितना लगेगा, दैट इज इक्वल्स टू एक्स इंटू ए माइनस ऑफ पी नॉट इंटू ए माइनस एक्स इंटू। सो नेट फोर्स कितना लगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू, ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिला, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू, ये होगा पी नॉट ए स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 पी नॉट एक्स, ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ पी नॉट इंटू ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका प्लस पी नॉट इंटू ए एक्स। यस सर, तो ये दोनों कट हो गया, तो माइनस माइनस से एक बचा माइनस पी नॉट एफ एक्स डायरेक्शन में, दैट इज माइनस ऑफ पी नॉट इंटू ए एक्स। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपकी, काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट इक्वल टू integration of f dx. So kinetic energy is nothing but equal to integration of f dx. That is nothing but equal to, so negative of p naught a x into dx. इसको इंटीग्रेट करो, लिमिट्स लगाओ 0 से लेकर ये तक पूरा का पूरा, सो ये जाएगा माइनस ऑफ पी नॉट ए एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स लगेंगे 0 से लेकर ए तक, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ पी नॉट ए क्यूब डिवाइडेड बाय, so this is the kinetic energy. Last question, question number 18. A plane sound wave is generated in a medium along the x-axis whose equation is given by y is equals to e cos omega t minus kx. If c is the speed of light of a speed of wave in a medium, there is a reference frame s which is moving with the uniform acceleration a in negative x direction of x-axis at t equal to 0. Both wave and the reference s coincide with each other at origin. The equation of a wave in a reference frame s is, आपको दिया है कि देखो इनिशियल तो जीरो वेलोसिटी एंड इट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ये नेगेटिव, यानी कि एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव होगा। तो ये बताओ एट एनी टाइम टी वो ऑब्जर्वर कहां पे मिलेगा, किसी भी टी टाइम पे, एट एनी टाइम टी ऑब्जर्वर कहां पे मिलेगा आपको, ऑब्जर्वर इज एट कहां पे मिलेगा, दैट इज एक्स डायरेक्शन में माइनस ऑफ 80 स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी 0 और वाई डायरेक्शन में 0। तो ओरिजिन ही शिफ्ट कर दो, तो शिफ्ट द ओरिजिन, ओरिजिन शिफ्ट करने के बाद मिले क्या मिलेगा, एक्स डैश की वैल्यू नहीं, ओरिजिन इक्वल टू एक्स माइनस ऑफ माइनस 1 ऑफ 80 स्क्वायर, यस और नो, यानी एक्स डैश की वैल्यू कितनी मिली, एक्स प्लस 1 हाफ 80 स्क्वायर। तो y की वैल्यू कितनी मिली, सो y इज नथिंग बट इक्वल टू हाउ मच, सो y इज नथिंग बट इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस x, तो x को रीसब्स्टिट्यूट करो तो कितना मिलेगा, a sin ऑफ ओमेगा t माइनस ऑफ k, x की वैल्यू कितना डालूंगा मैं, x डैश माइनस ऑफ 1 हाफ, तो ये मिलेगा दैट इज नथिंग बट इक्वल टू a sin ऑफ ओमेगा t माइनस ऑफ k x डैश प्लस 1 हाफ 80 स्क्वायर इनटू k। सॉरी, तो ओमेगा टी अगर कॉमन ले लिया, व्हाट इज द प्रश्न, y will be equal to how much, a sin of omega t bracket 1 plus इधर वाला ये कॉमन ले लिया minus of ax dash, this is the value of, हाँ थोड़ा सा आई कैन फील कि थोड़ा सा पेपर में थोड़ा डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि पेपर तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, आई कैन फील दोस थिंग्स। ये पेपर है एडवांस का, इसलिए एडवांस लेवल के क्वेश्चंस उस तरह के मिलेंगे आपको, थोड़ा और प्रैक्टिस, थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जो अमाउंट है वो थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी,
तभी जाके ये थोड़ा इजीली समझ में आएगा, ये चीजें आपको। चलो, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। चलो, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।